Hi, Amir is here, and today in this vocabulary lesson, I'm gonna share more 10 vocabularies that are used in our daily life. मैं आमिर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं फिर से नए 10 वर्ड्स लेकर आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिनका इस्तेमाल डेली इंग्लिश में इंग्लिश बोलते समय बहुत ज़्यादा किया जाता है. Our first word is harass. Harass. In English, परेशान करना या छेड़छाड़ करना. Let us see the example. उसने उसे परेशान किया या उसने उसके साथ छेड़छाड़ की. In English, he harassed her. He harassed her. Let us see the next word. Our next word is anonymity. Anonymity. In Hindi, गुमनाम रहना. गुमनाम रहना इन सेंस जिसका नाम हाईलाइट ना होना या पॉपुलर ना होना. लेट अस सी द एग्जांपल. उसे गुमनाम रहना पसंद है. उसे गुमनाम रहना पसंद है. इन इंग्लिश, ही प्रेफर्स anonymity. He prefers anonymity. Our next word is procure. Procure. In हिंदी, प्राप्त करना. प्राप्त करना. Let us see the example. वह अपनी डिग्री प्राप्त करने में सफल रही. वह अपनी डिग्री प्राप्त करने में सफल रही. She managed to procure her degree. She managed to procure her degree. Our next word is sequence. Sequence. In Hindi, क्रम से. क्रम से. Let us see the example. खिड़कियां क्रमबद्ध हैं यानी खिड़कियां क्रम से हैं. In English, windows are in sequence. Windows are in sequence. Let's see the next word. Overburdened. Overburdened. In Hindi, अत्यधिक बोझ से दबा हुआ. अत्यधिक बोझ से दबा हुआ. Let us see the example. वह अत्यधिक काम के बोझ से दबा हुआ है या वह अत्यधिक काम के बोझ से दबा हुआ था. वह अत्यधिक काम के बोझ से दबा हुआ था. In English, he was overburdened with his work. He was overburdened with his work. Let us see the next word is severe. Severe. गंभीर. In Hindi, गंभीर. Let us see the example. उसे गंभीर चोट लगी थी. उसे गंभीर चोट लगी थी. In English, he had a severe injury. He had a severe injury. Our next word is prompt. Prompt. In Hindi, प्रेरित करना यानी इनकरेज करना. एग्जाम्पल. उन्होंने उसके लिए सबको प्रेरित किया. उन्होंने उसके लिए सबको प्रेरित किया. In English, he prompted to everyone for that. He prompted to everyone for that. Let us see the next word. Next word is extremely. Extremely. In Hindi, अत्यंत. अत्यंत. Let us see the example. बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना अत्यंत कठिन है. बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना अत्यंत कठिन है. Climbing an icy hill is extremely difficult. Climbing an icy hill is extremely difficult. The next word, violate. Violate.
उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। Let us see the example. ड्राइवर ने नियमों का उल्लंघन किया, ड्राइवर ने नियमों का उल्लंघन किया। Driver violated the rules, driver violated the rules. Next word is elaborate, elaborate. इन हिंदी विस्तृत रूप से समझाना यानी अच्छी तरीके से समझाना। Let us see the example. उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझाया, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझाया। He elaborated to me everything properly. He elaborated to me everything properly. So these were the 10 words of today's lesson. I hope you enjoyed the video. If you really enjoyed it, please hit the like button. And if you have not subscribed yet our channel, please subscribe us and hit the bell icon so that you can never miss updates. And don't forget to share this video with your friends. So see you soon with the next vocabulary lesson. For the time being, take care of you and your family. Keep practicing speaking English. Bye bye. Take care.